Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, we have to explain one of the exciting topics within this reproductive biology, within the flowering plants, how pollen grains are decorated in the insect pollination by using one of the important material secreted by the secretory type of tapetum. This is called as pollen glue, or this is called as pollen kit. My dear students, if you are aware, if you are watching my videos continuously, if you are following the sequence, you must be able to understand what we are dictating here. We are actually explaining structure of this tapetum. We are explaining the role played by this tapetum. We are discussing what are different layers which cover what is called as the sporogenous tissue. Dear students, we discussed the outermost layer for this pollen sac was epidermis, followed by endothecium responsible for the dispersal of the pollen grains. Then it was the top of the middle layers which was responsible to store the material in the form of starch. Then this is important vital layer, nourishment layer, nursing layer, that is called as tapetum. This tapetum on the basis of behavior of the cells, it's of two types. If tapetal cells are degenerated at the earlier stages, we call this as periplasmodial type of tapetum. We have discussed it in the earlier lectures. Now, if the tapetal cells don't degenerate, rather they remain intact acting as a gland, we say that it is glandular type of tapetum. बेटा एक फंक्शन आपने जान ली है. जो glandular type of tapetum था, it was responsible to secrete one of the resistant biopolymers on this earth for the development of the pollen grain. This was called as sporopollen. You said that. सर sporopollen glandular type of tapetum से निकलता है और यही डिपॉजिट होता है pollen grain से. ओल्ड फार्मूला है, न ऑक्सीडेशन होगी, न लीचिंग होगी, न डिकम्पोशन होगी, एक पोलन ग्रेन हार्ड और रेजिस्टेंट मिलेगा. और जो फॉसिल पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये फॉसिल पोलन ग्रेन्स आर एक्चुअली ड्यू टू स्पोरोपोलन इन हियर. आफ्टर दैट देयर इज अनदर मटेरियल जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था. दिस मटेरियल इज, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, दिस मटेरियल इज पोलन किट. बट आपने याद रखना है, this pollen kit is usually composed of the important hydrophobic layer, hydrophobic material. This hydrophobic material is actually carotenoids. Besides carotenoids, glycoproteins could be there, glycolipids could be there, and carbohydrates could be there as well. But today, you have to say that this pollen kit is found in case of those pollen grains which are being pollinated by the insects. You discussed in the last lecture, these pollen grains are entomophilous pollen grains because entomophily is insect pollination. बेटा आज हमने देखना है ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिन पोलन ग्रेन्स में स्पोरोपोलिनिन के अलावा बिसाइड्स दिस स्पोरोपोलिनिन और एक लेयर डिपॉजिट होता है जिसे हम पोलन किट कहते हैं. सर इस पोलन किट का एक्चुअल रोल क्या है, मैं यह पे पॉइंट लिखूंगा. पोलन किट इज डिपॉजिटेड, it is deposited on axine of pollen grains. But which pollen grains? Pollinated by the insects. First point. Second point, they are released by second type of tapetum called secretory tapetum. Okay, ये मुझे पता है सर. Third and important point, it provides color. बेटा जो इंसेक्ट के पोलन ग्रेन्स है, इनका जो कलर होता है ना, येलो कलर, ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स. दे प्रोवाइड कलर, दे प्रोवाइड ऑर्डर, एंड they provide final shape, final structure to the pollen grain.
सो एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन्स की जो स्ट्रक्चर है, इनका जो स्मेल है और इनका जो कलर होता है ना बेटा, वो याद रखिएगा, द ऑल कलर ऑर्डर एंड शेप आर प्रोवाइडेड बाय दिस गिल्यू, दिस इज कॉल्ड एज पोलन किट। सो हेंस यू हैव टू रिमेंबर कि इनका जो कलर होता है, दिस कलर इज येलो और इट इज लिटिल बिट, वी हैव टू से ऑरेंज कलर। सो एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन्स ऑरेंज कलर क्यों है? आज मुझे पॉइंट समझ में आया। इनके बाहर एक लेयर बैठता है। प्लीज रिमेंबर, दिस लेयर इज ऑयली। When it is oily, this layer is hydrophobic. When it will be hydrophobic, definitely it will contain the hydrophobic material. One of the important hydrophobic material in the botanical world is carotenoids. इसके पास carotenoids होते हैं। लेकिन कलर, ऑर्डर और शेप जो पोलन ग्रेन्स की बेटा मिलती है ना, वो इसी पोलन किट से मिलती है, और इनका जो कलर होता है वो येलो या ऑरेंज येलो होता है। इसके बाद सर, what is role being played by this pollen kit towards the what is called as entomophilous pollen grain? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहां पे लिखे हम, role played by this pollen kit which is secreted by what is called as glandular tapetum। मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट रोल, it protects pollen grains against harmful ultraviolet rays। जेनेटिक्स की क्लासेस तो आपने पढ़ ली है मुझसे। जेनेटिक्स में बता रहा हूं मैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये वो रेडिएशंस होते हैं ना बेटा, जो थाइमीन और थाइमीन को बाइंड करके साइक्लोब्यूटेन रिंग बनाते हैं। ये वो एक रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन होती है, जो कल जाके थाइमीन डाइमर्स बनाती है, पाइरिमिडीन डाइमर्स बनाती है। और याद रखिएगा, ये हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, दे कुड कॉज द म्यूटेशंस एज वेल। इसलिए पोलन ग्रेन्स को बचाना है, यानी पोलन ग्रेन्स में एक्चुअल जो अंदर जाके मेल गैमेट्स है उनको बचाना है। अगर इनको बचाना है ना बेटा, याद रखिएगा, इनको बचाने के लिए एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन्स ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? दे हैव इवॉल्व्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑयली लेयर, हाइड्रोफोबिक लेयर। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज पोलन किट। So function number first, it protects the pollen grains against ultraviolet rays. दूसरी फंक्शन, दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा। सेकंड रोल played by what is called as the pollen kit। पहला आपने वहां भी याद रखा है। सेकंड, it is sticky and hence adheres to insect body। Okay, nice. So what does that mean? Whenever insect comes to visit the flower, there is mutualism, there is plus interaction. Insect gets the meal, but plant gets the reproduction. ये वहां से pollen grains उठा लेती है। ये faithful relationship है। It is an example of perfect love between insect and this flower, where these are not cheaters. एंड रिमेंबर, जब ये वापस जाता है, इसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन अटैच होते हैं। कॉमन सेंस है। पोलन ग्रेन तभी जाके अटैच होंगे जब इन पोलन ग्रेन्स के पास कोई एडहेरेंट मॉलिक्यूल होगा, फेविकॉल लाइक स्ट्रक्चर, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, स्टिकी सबस्टेंस होता है। प्लीज रिमेंबर, जो स्टिकी सबस्टेंस एक एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन के पास है, दिस इज पोलन किट। इसलिए दूसरा रोल है, इट इज स्टिकी एंड हेंस एडहेयर्स टू इंसेक्ट बॉडी। दूसरा रोल होता है। सर फर्स्ट इट वाज what is called as evolved by the plants here to protect against the ultraviolet radiations here. Second, being sticky, it gets attached towards the insect body. Third, so what is third? It has been found that it protects pollen grains against desiccation, or you will say dehydration. Simply speaking, it prevents water loss. It prevents water loss. एक पोलन ग्रेन के अंदर
वाटर बराबर होना चाहिए. This water should not be lost. It must be maintained within the pollen grain for the normal function and development of this pollen grain. लेकिन जिस पोलन ग्रेन के पास अब ये ऑयली लेयर है, बाहर का लेयर है, इसमें और एक फंक्शन देखी गई है बाय रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट्स. ये प्रोटेक्ट करता है एक पोलन ग्रेन को अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, अगेंस्ट डिहाइड्रेशन. सो हेंस वी विल से इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिहाइड्रेशन. 3 रोल है. सर व्हाट इज 4th रोल played by what is called as this pollen kit? I will say it helps in pollen clumping. Sir, what does that mean? I will say जब भी pollen grains उठते हैं एक इंसेक्ट से, it's not just one by one it's taken. No, एक इंसेक्ट आता है बेटा, ये इंसेक्ट अपने साथ एक पोलन की एक कटोरी को लेता है, एक पोलन के एक ग्रुप को लेता है अपने साथ. लेकिन जो एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनमें एक और दूसरा पोलन ग्रेन, एक और दूसरा पोलन ग्रेन, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, एक क्लम्प बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं. क्लस्टर ये तभी बनाते हैं जब इनके पास ये ऑयली लेयर होता है, सिटिक हो जाता है. इसलिए इट हैज बीन फाउंड दैट इट हेल्प्स इन एग्रीगेशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड वी मस्ट से दैट इट हेल्प्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज पोलन क्लम्पिंग. जब पोलन क्लम्पिंग होती है तभी जाके ये ट्रांसफर होता है एज ए ग्रुप ऑफ द पोलन ग्रेन्स. 5th point. Sir, what is its another role? It protects against microbial, or we simply say biotic attack. Please remember, there could be biological agents in the form of pathogens. They will love the pollen grain. They will try to attack this pollen grain. मैं आपको और एक पॉइंट आज यहां पे बता देता हूं. Nowadays, pollen grains are actually taken from the flowers and different products coming in the market are obtained from them. And being rich in the nutrients, vitamins and minerals, they can be given to those, but according to prescription of the doctor. जब तक वो ना कहे तब तक ये ऐसे नहीं देते हैं. Those who are what is called as weak, they can consume those pollen products here which come in the market, but first of all they must consult this doctor here. Hence we have to say that they are rich in the sugars, they are rich in the proteins, they are rich in the vitamins, they are rich in the minerals here. They could be attacked by the microbes, they could be attacked by the fungi. इसलिए इनको बचाने के लिए there is another important function. इसको बचाने के लिए, बायोटिक अटैक से बचाने के लिए एक लेयर बैठा है एंटोमोफिली में. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोलन किट हियर. सो बेटा ये कुछ फंक्शंस है जो आपने याद रखने हैं, जो एक पोलन किट प्रोवाइड करता है एक एंटोमोफिलस पोलन ग्रेन के लिए. सो पहला फंक्शन आपने याद रखा था, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाता है. और लास्ट रोल जो आपने याद रखा है यहां पे, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रोबियल और बायोटिक अटैक. ये भी आपने याद रखा है. इससे क्लम्पिंग होती है, ये भी आपने याद रखा है. इससे एडहियरेंस होती है, ये भी आपने याद रखा है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनके पास पोलन किट होता है, इनमें ये वाटर लॉस नहीं होता है. और एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, इट प्रिवेंट्स enzyme attack. It has been found that if this pollen grain covered with this pollen kit could be attacked by the enzymes for their degradation, for their attack, for their disorder, for killing, remember there is a layer which layer protects this pollen, what is called as the pollen grain here, against enzyme attack, against this type of attack. This is the layer evolved by the entomophilous pollen grains here. This is called as entomophily. बेटा आपने याद रखा है, this was the role being played by what is called as pollen kit. I hope, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपने इन functions को you have noted them
आपने इनको अंडरस्टैंड भी बेटा कर दिया होगा. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो आपने याद रखे थे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपोरोपोलिन एंड दैट इज कॉल्ड एज पोलन कीटर. लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन में इस सारे टॉपिक को सम करके इसको लेके आई विल कंक्लूड व्हाट इज द रूल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ द टैपेटम. कुछ और भी फंक्शंस आएंगे लेकिन कुछ फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे वी विल डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रूल ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ दिस टैपेटम. प्लीज रिमेंबर, पहला रूल जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट, इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम used to break callose around pollen tetrad. बेटा ये आपको पता है, जब 4 pollen grains बनते हैं, they are locked, they are jailed. In order to release them, there is enzyme called as callase enzyme. This is glucanase enzyme. Glucanase enzyme. यही इस कैलोस पे आता है, ब्रेक करके इन पोलन ग्रेन्स को यहां से छोड़ देता है. एक बात. दूसरी बात, इट इज नर्स लेयर. दैट मीन्स यू मस्ट प्रेडिक्ट द नरिशमेंट इज गिवन टू द पोलन ग्रेन्स बाय दिस टैपेटल लेयर. आई विल से biologically it has been found that if the tapetal layer is degraded, अगर इसको खत्म करेंगे, प्लीज रिमेंबर ये इतना वाइटल है, अगर इसको खत्म करेंगे, इट हैज बीन फाउंड दैट ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे बिकम स्टीराइल, नॉन फंक्शनल. इसलिए पोलन टैपेटम है तो तभी जाके एक पोलन है. अगर टैपेटम नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स. इसलिए ये वाइटल है, इसलिए फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेयर है. और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, this game is overall played by the genes here. Number of genes have been found by the developmental biologists, molecular biologists. They have found whenever the tapetum gets activated, number of genes get activated. Recently there has been found a gene called as TAS1. This is gene, इसकी एक्टिविटी ज्यादा देखी गई है. That means ये कुछ ऐसे भी एंजाइम्स बनाते होंगे, ऐसे भी प्रोटीन्स बनाते होंगे, दे विल बी हेल्पफुल व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन. आपने सिंपली याद रखना है, जब पोलन ग्रेन है ये तब है, ये पोलन ग्रेन तब है जब यहां पे टैपेटल लेयर होता है. नो टैपेटम, नो सच पोलन ग्रेन्स हियर. दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज नर्स लेयर, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हियर. तीसरी बात आपने याद रखनी है, sir, what is that? It secretes sporopollen, one of the hardest biopolymer on the planet Earth, plus oily layer. This is called as pollen kit or this is called as pollen gel. ये भी इन्हीं से निकलता है. हालांकि ये निकलता है, it has been found to be released from the glandular tapetum. Fourth rule, it secretes indole 3-acetic acid. Sir, what does indole 3-acetic acid mean? IAA. Please remember, it is regarded as natural oxygen. Oxygen can exist in nature in the form of indole 3-acetic acid. ये synthesize भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल है इन द फॉर्म ऑफ फाइटोहार्मोन. लेकिन किसने सेक्रेट किया? पोलन ग्रेन्स के लिए सेक्रेट किया. किसने? टैपेटम ने सेक्रेट किया. इसलिए टैपेटम का और एक रोल है, ये इंडोल 3-एसिटिक एसिड सेक्रेट करता है. सर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, व्हाट इज IAA? इंडोल एसिटिक एसिड. दिस इज नेचुरल ऑक्सीजन. इन्हीं से कल जाके पोलन ग्रेन्स ग्रूम हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे. बेटा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा. Sir, what is that? It has been found to release, to secrete phenylalanine, an enzyme. Phenylalanine
ammonia lyase enzyme. Phenylalanine ammonia lyase enzyme. Sir, what is that enzyme? This is enzyme. This is enzyme. Please remember, ये वो एंजाइम है बेटा जिससे कल जाके पिगमेंट्स बनते हैं. ये वही पिगमेंट्स है बेटा, ये वही फ्लेवोनॉइड्स है, ये वही फ्लेवोनॉइड्स है जो कल जाके पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. सो एक पोलन ग्रेन को पिगमेंट्स चाहिए, कैरोटिनॉइड्स चाहिए, फ्लेवोनॉइड्स चाहिए. दीज आर फ्लेवोनॉइड्स. बेटा ये फ्लेवोनॉइड्स तभी आएंगे जब इनको कोई प्रिकर्सर होगा. प्रिकर्सर तब होगा जब एंजाइम्स होंगे. बेटा एक एंजाइम है फेनाइलएलानिन अमोनिया लाइस एंजाइम. बेटा ये इसी टैपेटम से आया है, तभी जाके फ्लेवोनॉइड पाथवे एग्जिस्ट हुआ है, तभी जाके पोलन ग्रेन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है. एक कैलेस एंजाइम, दूसरा नर्सलियर, तीसरा स्पोरोपोलिन, फोर्थ वन पोलन किट, और एक पार्ट हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड. Another point, phenylalanine ammonia lyase enzyme responsible for the development of the flavonoids on the pollen grains. और एक point आपको मैं बताऊंगा. और एक point. Sir, what is that? It secretes proteins. It releases proteins for pollen grains. ये pollen grains के लिए proteins देता है. Sir, इन proteins का काम क्या होता है? कल जाके याद रखिएगा. एक पोलन रिकॉग्नाइज होता है कि ये फॉरेन पोलन ग्रेन है या अपना पोलन ग्रेन है. ये इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से रिकॉग्नाइज होता है. सो एक पोलन ग्रेन के पास आप प्रोटीन्स देख सकते हैं, ये प्रोटीन्स है, लेकिन ये प्रोटीन टैपेटम से आया है. Hence you have to say that it also secretes, release the pollen grain. ये प्रोटीन ये प्रोटीन्स पोलन ग्रेन पे आते हैं और इसी की वजह से पोलन रिकॉग्निशन होती है. पोलन रिकॉग्निशन का मतलब है ये पोलन ग्रेन अपना है, ओन सेल्फ, या ये फॉरेन है. ये तभी हो सकता है जब इसके पास प्रोटीन्स होता है. बेटा दिस वाज द रोल बीइंग प्लेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द टैपेटम. दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी. I hope you have understood this concept here. In the next lecture, we're discussing what is called as microsporogenesis.